चले, जब सोलर है तो मीटर इस डायरेक्शन में चले, जब ये दोनों बंद हैं तो हुकूमत का जो ग्रिड आ रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा. सो एज ए रिजल्ट आफ्टर मंथ, एंड ऑफ मंथ, देयर विल बी नेट मीटर रीडिंग. अगर वो इफ इट इज लेस देन दी जनरेटेड बाय द पर्सन, तो हम पे करेंगे टू दी जेंटलमैन हु हैज विंड टर्बाइन और सोलर. अगर कम है और हमने ज्यादा इस्तेमाल की घर वाले ने, तो हुकूमत हमसे चार्ज करेगी. ये पॉलिसी मौजूद है, इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. सिर्फ इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं, क्या इकदाम उठाने चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन जरूरी बनाए? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन दिस एरिया, इन KESC, in Hyderabad Electric Supply Corporation and all other corporations for Lesco या Fesco जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक, इन सबों को ट्रेन करना है कि नेट मीटरिंग को अलाउ समझ लें और अलाउ करें लोगों को, और एनकरेज करें कि वो अपने जो सोलर और विंड एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं वो ग्रिड में आने के लिए उनको समझ लेना चाहिए और उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए और पे करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए. This means of course that all new construction should only be authorized provided that it is able to produce a certain amount of energy, that is solar photovoltaic panels on the roof, possibly water heating systems, solar water heating systems, plus wind turbines where they can be put in every single new housing development. Plus, of course, efficient construction in the houses, tiles that can prevent the sun from getting into the construction, the masonry work, more efficient windows that do not allow so much sun to come in. In other words, you can reduce the energy requirements of the buildings, you can reduce in Pakistan by at least 85% with simple technologies that are not rocket science but have been known for years. So these small steps, using putting off extra lights and using instruments that prevent the sun from coming into the construction, it's very important, as you say. Well, these are not high-tech solutions. I mean, these are just a simple window designs. The glass that is put in the windows can be there's a type of glass which is known as heat transference. In our countries where it's cold, we turn it the other way around so that we allow the heat in. But in your countries, you reverse the window so the heat can't come in. It's been known for years. Likewise, that the requirements for the building itself must be very they must be enforced, because too much faulty construction is being allowed in Pakistan, which will result in more energy costs in the future. We have to consider that the whole world is facing serious energy crises, which are only going to get bigger and bigger and bigger. So every single step we take now, both in requirement for jobs on the ground, industry creation, etc., etc., plus our method of transport, our method of where we live, all these things have to be revised with regard to the scenario that will take place in the very near future and is already happening, as we see here in front of our very eyes here in Karachi. Talking about solar panels and photovoltaic panels, how easily available are they in Pakistan, and how can public reach them, and how efficient they are in Pakistan, especially because we've got a lot of sunlight here? देखिए, एक पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरर है जो इस्लामाबाद में बना रहे हैं सोलर सेल्स, अख्तर सोलर के नाम से. वो अच्छे सोलर सेल्स ला के असेंबल करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, एंड दे आर डिसेंट कॉस्ट. दे आर नॉट ऑफ कोर्स फ्री, अभी बहुत सस्ते नहीं हुए. उनको हमें एनकरेज करना चाहिए. हुकूमत को जितने ऑर्डर हैं पाकिस्तानी बने हुए सोलर सेल पे देने चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए. बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन reduces, then everybody can afford. Some brunt has to be taken by the government. हुआ ये है कि हाइड्रो पावर सारे हुकूमत ने बनाए, न्यूक्लियर पावर सारे हुकूमत ने बनाए, कोल में भी हुकूमत आ रही है, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में हुकूमत नहीं आई. So government must first put full scale manufacturing system on solar energy for solar cells manufacturing, or complement the existing solar cell manufacturing industry in Pakistan and produce the raw material, which is the raw silicon in Pakistan through quartz. Quartz जो है यहाँ पे जमपीर के पास मौजूद है. पाकिस्तान में 50 मिलियन टन जो है चिटा पहाड़ में है मौजूद, ये एबटाबाद से आगे, मानसेरा से आगे.
We have raw material, but we have to, somebody has to convince the government of Pakistan to invest for solar cell today, just like what they did 50 years back or 40 years back in oil and gas, hydropower, nuclear power. They must come and invest now in these two technologies immediately. जिसमें विंड है और सोलर है, और पैरेलल बल्कि इमीडिएटली इसके साथ ही वेस्ट टू पावर के अंदर. वेस्ट इज इमीडिएटली, अभी जो वेस्ट सारा जल रहा है, आप याद रखें, जैसे आग रखा है, आग के ऊपर आप एक को बाल्टी रख दें, वो पानी बॉयल होना शुरू होता है, उससे स्टीम पैदा हो रही है. यूज दैट स्टीम फॉर पावर जनरेशन. ये हम सारी वेस्ट उसके अंदर जितने हम उससे पावर पैदा कर सकते हैं. और कराची के 600 टन से हम आराम से 30 से 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं आराम से. और ऐसे 3 डंप हैं जहाँ 600 टन पर डे जा रहा है वेस्ट. वी कैन वेरी इजीली डू दैट बाय डायरेक्टली बर्निंग फर्स्ट, और देन सब्सिक्वेंटली इधर डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट उसको हम बायोगैस के पे ला सकते हैं, उसको हम जो डायरेक्ट इंसिनरेशन से भी बिजली पैदा कर सकते हैं. Anaerobic digestion भी वो एक चीज है. बायोगैस है थ्रू एनिमल वेस्ट. Exactly. I'd like to say a little more about the photovoltaic. It's a great regret that there's only this one company in Islamabad making them. The government of Pakistan was offered a project for a factory for photovoltaic production many years ago. It did not take up this option. The problem is in Pakistan that there is a lot of photovoltaic units available on the market, but which do not have the life that a consumer expects, because they're not locally made, they're imported, and of a significantly lower quality than I personally would like to purchase. So in other words, this once again is a technology that Pakistan must develop itself, even though some of the products which are being imported are at lower cost. But cost is a function, as you know, of the length of service, because photovoltaic cells should last for about 30, 40 years or so. This is not the case with most of what is available on the market. So in other words, once again, this is an imperative for Pakistan to develop its own indigenous industry in this field. नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में. हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर नसीम और जॉन फर्स साहब. ये हमें बता रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी ऑयल के अलावा हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है, पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी अहम है. हम इसी मौजू पे बात करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. देखते रहिए द मार्केट शो.